कानून की बात करिए वकील मैं साहब। कानूनी की बात कर रहा हूँ। कहाँ है नया नोटिफिकेशन? सर नया नोटिफिकेशन नहीं है। हम जो कॉम्प्रोमाइज करेगा आपसे उसकी जमीन आप लेंगे, जो नहीं करेगा उसकी नहीं लेंगे। दैट्स एंड ऑफ द मैटर। तो आप ऐसा लिख देते हैं अर्लियर स्टेटमेंट है और आपका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, ऐसा लिखा देते हैं इसमें। नहीं इफ यू वांट टू प्ले सो सेफ then I'll have to write that you don't have any independent instructions नो and I'll call your CEO to make a statement here. कोर्ट में इतना डर के काम नहीं होता है। either you have instructions or you have no instructions. और तीसरी कैटेगरी होती है that without instructions you act. माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। My lord, may kindly have a look to writ petition number 18951/2018, my lord. इसमें पहले बताइए ना 14। सर वो दोनों एक सी पिटीशन है, उसके एनेक्सेस में रिफर कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे आप 17432 के कर लीजिए एनेक्सेस रेफर। उसमें सर पहले तो हमने इसका जो ओरिजिनल रिप्लाई फाइल किया था तो वो पहली दूसरी वाली रिट पिटीशन का रिप्लाई फाइल कर लिया था। अब इसमें सर हमने वो नोटिस वगैरह भी फाइल किए हैं। ये हमने कल फाइल किया था। whether you are acquiring the land or not. My lord, now we are intended to do it with compromise and consent formula, my lord. Earlier, my lord, the proceedings was as per लैंड the एक्विजिशन नहीं कर रहे हैं अब आप? लैंड एक्विजिशन नहीं कर रहे हैं आप। नहीं कर रहे हैं ना? हाँ, लैंड एक्विजिशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या सर नाउ द मूट क्वेश्चन बिफोर योर लॉर्डशिप इज that if the JDA enacted an scheme, my lord, which has been brought into force, my lord, and if within a period of 3 years, if the completion is not there, my lord, so whether 3 years period is for completion or to take steps towards the implementation of that scheme. Once you admit that you are not Yeah. acquiring the land, that means that the scheme has lapsed. Now you may float a new scheme, new mechanism to enter into compromise and acquire some chunks of land where the farmers are or the landowners are agreeable to that compromise. If they are not agreeable, you cannot force them. You will have to resort to land acquisition proceedings. Yes, sir. Right? Yes. So for the present, unless you float a new scheme pointing out that you intend to procure or secure land through compromise, Yes, sir. and inviting intention of the prospective sellers Yes, sir. to sell their land as per the compromise, how can you bind the petitioner or anybody else to surrender their land and My lord, not issue NOC? that initial capping of 3 years, my lord, which has been provided under the statute, my lord, that has been recently interpreted by the Honorable Supreme Court, my lord. That interpretation may be seen. Ji. This is 23, my lord, Supreme Court. I have understood. We'll see that capping is different. Yes, sir. Issue is that Yes, sir. when notice was to acquire the land, Yes, sir. now you are not acquiring the land in terms of the Land Acquisition Act. That एक्वायर तो लैंड एक्विजिशन एक्ट में होती है कि कोई और किसी और एक्ट नहीं में सर, होती है? उसमें भी होती है सर। दो प्रोसेस है एक्विजिशन की, एक है थ्रू कंसेंट, सेकंड इज एक्विजिशन। कहाँ है वो नोटिफिकेशन कहाँ? चलिए सर, वो जो नोटिफिकेशन जो चैलेंज में था पहले राउंड पिटीशन में, वो अनेक्षर RR2 है सर इस पिटीशन में। RR2 देखें आपका। चलिए पेज 19 पे पढ़िएगा इसको। सर, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि में अनुसूची के खाने 6 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू अर्जन अधिनियम 1894 के सो की धारा सो के उपबंध के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय से सूचना दी जाती है। कितने दिन में लैंड एक्विजिशन कंप्लीट करना रहता है? 1894 का एक्ट दीजिएगा। 2013 का जो ये नोटिफिकेशन है, हाँ। कितने दिन में पूरा करना रहता है? नोट सर, इसको तो धारा 4 का कब निकला नोटिफिकेशन? नहीं सर, ये तो हम इसमें हम आगे नहीं बढ़े सर। नहीं बढ़े। इसी बाबत पे हमने स्टेटमेंट दिया। हाँ, तो इसी बाबत नया जब लाएंगे स्कीम तो अपनी नई स्कीम में जो जिसको मंजूर होगा तब करिएगा। इस स्कीम को जब आप आगे नहीं बढ़े, आपने स्टेटमेंट दे दिया नहीं, लेकिन वो वेयर इज द न्यू स्कीम? चलिए, दिस स्टेटमेंट इज फॉर दिस नोटिस ओनली। ओके, ठीक है। नाउ वेयर इज द न्यू नोटिफिकेशन? नाउ अनलेस यू इशू अ न्यू नोटिफिकेशन, can you keep somebody held up? मतलब नाउ वी आर कानून की बात करिए वकील मैं साहब। कानूनी की बात कर रहा हूँ। कहाँ है नया नोटिफिकेशन? सर, नया नोटिफिकेशन नहीं है। हम ये कह रहे थे कि अब हम कंप्रोमाइज के थ्रू बढ़ रहे हैं सर। नहीं, बढ़ रहे होंगे तो उसके लिए नोटिफिकेशन तो निकालेंगे। नोटिफिकेशन के लिए सर जो में बैठ के कंप्रोमाइज करेंगे। नहीं, जो सब्सिक्वेंट पिटीशन है, इसलिए मैं उससे शुरू होना चाह रहा था। उसमें जो हमने नोटिस दिया था वो उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया। नोटिस उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको चले। पहले फर्स्ट केस में हाँ, इसमें ये नोटिफिकेशन के मुताबिक आप नहीं बढ़ रहे, इसके इस नोटिफिकेशन के मुताबिक नहीं बढ़ रहे, तो इनको तो एनओसी जारी कर दीजिए, फिर दूसरा केस पकड़ते हैं। ठीक है, सर, मेरा ये कहना था कि इनकी रिलीफ क्या है सर, थोड़ा सा पढ़िए ना। इनकी रिलीफ क्या है।
they are seeking that the notification which has been done by this JDA malum way back in 2006 malum, that may be declared as lapse हाँ, under section 54. तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आप उसको नहीं, नहीं प्रोसीड कर वो रहे हैं। कंपलसरी एक्विजिशन में क्या क्या उसके होने से वो स्कीम ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगी? दिस इज द नहीं, क्वेश्चन। नहीं, तो पढ़े इनका नोटिफिकेशन पढ़े। 2006 का नोटिफिकेशन में आपने क्या कार्रवाई करी? तो 2006 के नोटिफिकेशन के बाद पहले हमने इसको कंसेंट में ट्राई किया, फिर नहीं जब वो हुआ 2013 में आपने लैंड एक्विजिशन लैंड नोटिफिकेशन, एक्विजिशन तो रिजॉर्ट ये नोटिफिकेशन अपने आप मर्ज हो गया 2013 के नोटिफिकेशन में। हाँ 2013 के नोटिफिकेशन के मुताबिक आप बढ़ नहीं रही। दिस इज योर एडमिशन and this is the statement which was given by Mr. Kapil Duggal. yes, sir. Now, and you say that you abide by that statement. Then what remains? अब हमारा ये कहना था सर कि वो स्टेटमेंट जो था वो क्वा दैट पर्टिकुलर स्कीम था, और जो एक्विजिशन आप प्रोसीडिंग या तो समझना नहीं चाह रहे, you are too bound by the instructions and you are not ready to apply your mind, or please try to understand that after 2006 notification you did nothing. You issued a fresh notification in 2013 under Land Acquisition Act. Once that notification was issued for the same piece of land, then that notification, 2006 notification merged into 2013 notification. 13. Principle of merger will apply. Yes, sir. Then once it has merged in 2013 notification and you admit that no proceedings are pending under the 2013 notification, or you do not intend to proceed under 2013 notification, then what will be the outcome of this petition? That there are no land acquisition proceedings for the petitioner vis-a-vis 2006 and 2013 notification. Now, that does not preclude you. Your anxiety is also answered. That will not preclude you from floating a new scheme or entering into a compromise to acquire land. But that will be a voluntary act. Land acquisition is an involuntary act. Yes, if my land comes yes, under yes. the notification, Yes, then I am only entitled to receive the compensation, solatium, etc., and my land will go. Yes, yes. Or you have to only show the public purpose. Yes, yes. But once you say that you are not acting on the basis of the land acquisition notification, then you may acquire tens and hundreds acres of land on the basis of compromise, for which you are always free. But Malot, for that, Malot, the scheme should be existence, Malot. Now, हम स्कीम को थोड़ा ना कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन का नोटिस खत्म हो गया है, आपका अंडरटेकिंग नोट कर लेना, आप कंप्रोमाइज में करेंगे, जो कंप्रोमाइज करेगा आपसे उसकी जमीन आप लेंगे, जो नहीं करेगा उसकी नहीं लेंगे। दैट्स एंड ऑफ द मैटर। सर वो प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है, वो सब्सिक्वेंट पिटीशन में चलेगी। वो सब्सिक्वेंट नहीं, अभी पहले इसकी बात करें। सर हमारा आपने जब सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग क्या इनिशिएट किया आपने? कंप्रोमाइज पर कंप्रोमाइज के लिए, तो जो ठीक है, तो यू कैन नॉट बाउंड समबडी टू एंटर इनटू अ कंप्रोमाइज। You can only offer. Yes, yes. That limitation. That's all. So, with regard to scheme, my lord, no observation. नहीं, ठीक है, लिखिएगा। In view of such facts, when respondents are not proceeding with the land acquisition notification. As per the earlier statement. तो आप ऐसा लिख देते हैं, अर्लियर स्टेटमेंट है और आपका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, ऐसा लिखा देते हैं इसमें। नहीं, हम अब हम नेगोशिएशन पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लिखा दिया ना नेगोशिएशन। If you want to play so safe, then I'll have to write that you don't have any independent instructions. No. And I'll call your CEO to make a statement here. That is there, my lord. That. कोर्ट में इतना डर के काम नहीं होता है। Either you have instructions or you have no instructions. और तीसरी कैटेगरी होती है that without instructions you act. नहीं, ठीक है, चलिए। In above terms, petition is disposed of. I'm highly obliged. Sir. Can it be 60 days? Connected. But Yes. can it be 60 days? है? Can it be 60 days? 30 days बहुत है। आपके अधिकारी काम करेंगे तो 30 दिन ज्यादा समय है। I'm obliged.